Hello, my dear students. This is Abhishek Mishra, Faculty of Social Studies at Mount Litra Z School, Jhansi. In this video, I am going to teach you class 10th Economics chapter number 2, Sectors of the Indian Economy. In my last video, we had studied about the various activities that are done in different sectors of our country. So here in this video, we are going to start the activities that are done mainly in the tertiary sector, and we will also get to know the rising importance of the tertiary sector in production. जैसा कि आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहता. No one wants to become a farmer nowadays. People are mainly running towards the tertiary sector. All of us studying just to get a job in tertiary sector. No one wants to become a farmer, but all wants to get food. खाना सभी को चाहिए है, बट फार्मर कोई नहीं बनना चाहता. सबके सब टर्शरी सेक्टर में जाना चाहते हैं. दैट्स वाई द टर्शरी सेक्टर इज गेनिंग मच मोर इंपॉर्टेंस इन द रिसेंट टाइम्स. Let's discuss it and see the extent of the tertiary sector. Over the 40 years between 1970 to 1971 and 2010 to 2011, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sectors, because from this time to this time people are mainly shifting towards the tertiary sector. लोग जो है वो ज़्यादा खींचे चले जा रहे हैं tertiary sector की तरफ. Initially, India was an agricultural country where majority of the population practiced agriculture in our country. But nowadays, where people are shifting towards the tertiary sector, that's why the activities is mainly done in tertiary sector. As a result, in the year 2010 to 2011, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. Let's discuss these reasons. First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, banks, administrative office, municipal corporation, defense, transport, insurance company, etc. are required. When people are earning more money, so they are requiring these services मोर एंड मोर. जब लोगों की इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज का, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कराते हैं. लोग ज़्यादा पैसा डिफेंस पे खर्च करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं, टूरिज्म पे खर्च करते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, एफडी करवाते हैं. तो जैसे जैसे लोगों का पैसा बढ़ता चला जा रहा है, लोग जो है वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं, इलाज अच्छी जगह पे चाहते हैं वो. ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट. That's why the importance of the tertiary sector is growing very rapidly. These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage, and the like, as we have already seen. As the primary and the secondary sector will grow, they will require more services from the tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर में अनाज उगाया जाएगा, इसको सेकेंडरी सेक्टर तक भेजने के लिए टर्शरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी. किस चीज़ की? ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की. सपोज प्राइमरी सेक्टर में शुगर उगाई जाती है, शुगर केन, और ये सेकेंडरी सेक्टर जो है ये शुगर बनाता है, तो शुगर केन को यहां तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. एंड फॉर दिस यू नीड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एज वेल. सो दिस विल गिव इंपॉर्टेंस टू द टर्शरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अब लोगों को बेचना है तो इन लोगों को भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी. मीन्स बोथ दीज सेक्टर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ओवर द टर्शरी सेक्टर. बोथ प्राइमरी and secondary are totally dependent over the tertiary sector. This tertiary sector is providing services to the secondary as well as to the primary sector. Now the third reason, as income level rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out. People are going to restaurant nowadays more and more because they are having more income. For tourism,
for shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc., etc. This is just because people have more money nowadays. So you can see this change quite sharply in cities, especially in big cities where people can be found in big malls, theaters, or so called as cinemas, है ना, fairs. So here people are demanding more public facilities. Then the fourth reason, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. आज आप देख सकते हैं कि मेनली आपके कंट्री में जो भी काम हो रहे होंगे सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं. इवन हम ये पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं. तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, जहां आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं. सोशल मीडिया के दौर में हम रह रहे हैं, मीम्स के दौर में हम रह रहे हैं. तो यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज, या आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इट इज गेनिंग मच मोर इंपॉर्टेंस नाउअडेज. दैट्स व्हाई दिस टर्शरी सेक्टर इज राइजिंग वेरी रैपिडली. दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Most of the time this question has been asked in your board exam कि why the tertiary sector is growing importance nowadays. So you need to write all these 4 reasons. Okay. Now this portion we will cover in my next video. Till then, goodbye. God bless you.